Hey guys, welcome back to my channel Elegance with Enchantress. Today's topic is how to create different types of winged eyeliner according to your eye shape. I have already done my eye makeup. एंड गाइस, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। So here I am using Lakme Insta Liner. Remove excess parts before applying. गाइस, आपको बहुत ज़्यादा पतला लाइन ड्रॉ करना है और आपको पता ही होगा कि बहुत ज़्यादा मोटा लाइन ड्रॉ करने से आपका आईलाइनर फैल सकता है। सो बी केयरफुल बिगिनर्स। सो आपको पहले बहुत ज़्यादा पतला लाइन ही ड्रॉ करना है। फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ विंग। इफ़ यू आर अ बिगिनर तो आपको ये बात ज़रूर ध्यान में रखना है कि आपको पहले विंग ड्रॉ करना है, उसके बाद उस विंग को लेके मिडिल, उसके बाद मिडिल से लेके इनर कॉर्नर तक ड्रॉ करना है। Well, I do it all at once. Then slowly bring that line to the middle. Almond आई शेप में इस तरह का आईलाइनर लुक बहुत ज़्यादा अच्छा दिखेगा। I am showing you all step by step. If you have monolid eyes, then draw your eyeliner like this. And guys, स्मोकी आई मेकअप के साथ भी ये वाला आईलाइनर बहुत अच्छा लगेगा दिखने में। मैंने अपने राइट आई में आलमंड आई के अकॉर्डिंग एंड लेफ्ट आई में मोनोलिड आई शेप के अकॉर्डिंग आईलाइनर ड्रॉ करके दिखाया। If you have round eye shape, then draw your eyeliner like this. अगर आपका आई शेप राउंड है या डाउन टर्न्ड है, जहाँ आपका आई लैश एंड हो रहा है वहीं से हल्का सा विंग ऊपर की तरह लिफ्ट कर लीजिए। इससे आपका आई बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट दिखेगा। If you have hooded eyes, then draw your eyeliner like this. Hooded eyes में ये वाला eyeliner लुक बहुत ज़्यादा अच्छा दिखेगा। Finishing my eye makeup with mascara. So guys, that was all for today. होप कि वीडियो हेल्पफुल रहा हो।